अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि एफपीएससी ने इंग्लिश लेक्चरशिप की सीट्स अनाउंस की हैं और उसका सिलेबस भी दे दिए। सो इस हवाले से स्टूडेंट्स का असरार था कि क्लास शुरू की जाए। तो हम 4 वीक्स यानी 1 मंथ की एक ऑनलाइन इसका सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई 1 मंथ या 4 वीक का ये सेशन क्यों है? वो इसलिए कि एफपीएससी का जो सिलेबस है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। जो पीपीएससी की हमारी प्रिपरेशन कोर्स होता है दैट इज़ ऑफ 2 मंथ्स, और जो एफपीएससी है दैट इज ऑफ 1 मंथ, क्योंकि इसमें हमारे पास एक गिवन सिलेबस है जिसकी डिटेल्ड स्टडी लाइव क्लासरूम में हम करेंगे। तो दिस इज 4 वीक्स क्लास। ऑनलाइन क्लास होगी 3 डेज अ वीक, मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे। शाम को 8:30 से 10 बजे तक ये सेशन होगा गूगल मीट पे लाइव। और 23 फरवरी से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। फी और अकाउंट डिटेल्स आपके सामने हैं। आप इसको पॉज करके इसको देख भी सकते हैं। You know me well. I am Dr. Jahazeb Jahan from University of Education. So let's talk about the syllabus breakdown. We have English literature, 16th to 20th century, vocabulary, structuring of sentences, linguistics, English language teaching, grammar, syntax, diction, teaching techniques and methodology, classroom management and discipline, testing and evaluation. So this would be covered in our sessions. So this is the breakdown. जो syllabus है हमारा week 1 day 1 will talk about Renaissance age, grammar, vocabulary, language and its characteristics. So one element from history, one from grammar, one from vocabulary and one from linguistics. इस तरह हम लेके चलेंगे. week 1 day 2 में हम Puritan age, grammar, sentence structure, vocabulary और basic concepts of linguistics इनको डिस्कस करेंगे. week 1 day 3 restoration age, grammar, vocabulary and phonetics को डिस्कस किया जाएगा. और ये डिस्कशंस जो हैं ये ऑनलाइन होंगी, ऑनलाइन क्लास होगी 1.5 आवर की. इसमें कम्प्लीटली हम इस जो रोज़ की रूटीन होगी उसे डिस्कस करेंगे. रोज़ के जो हमारा सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेशन, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड फोनेटिक्स, तो इसके रोज़ के टेस्ट्स होंगे जो कि आप क्लास के बाद आपको दिए जाएंगे ताकि आप अगले दिन तक उसे सॉल्व कर सकें. आपको उसका स्कोर भी पता चलता रहेगा. सो आपकी प्रेपरेशन भी होती रहेगी. इसके साथ साथ आपको जो जो हम पढ़ेंगे उसके पीडीएफ नोट्स जो हैं, हैंड आउट्स, वो साथ साथ दिए जाएंगे. week 2 day 1 18th century literature, diction, teaching techniques and methodologies, phonology. सो टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज बहुत ज़्यादा हैं तो इसे हमने ज़्यादा बेस के ऊपर रखा है. week 2 day 2 रोमांटिक एज, डिक्शन, टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज चलेंगी. वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होगा. week 2 day 3 Victorian age, diction, teaching techniques and methodology, and morphology and syntax. But then week 3 day 1 modern literature, diction, teaching techniques will go on, and semantics. week 3 day 2 contemporary literature, Bloom's taxonomy, testing and evaluation, classroom management and discipline, pragmatics. week 3 day 3 Bloom's taxonomy, testing and evaluation, classroom management and discipline, and sociolinguistics. week 4 day 1 Bloom's taxonomy, testing and evaluation, classroom management and discipline, and psycholinguistics. week 4 day 2 Bloom's taxonomy, testing and evaluation, classroom management and discipline, and language and brain. week 4 day 3 Bloom's taxonomy, testing and evaluation, classroom management and discipline. So this is here that we reach. So in this we're also going to talk about English language teaching, और उसके हवाले से जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के वो आएंगे जो कि ऑलरेडी हमारे इसमें कवर हो जाएंगे. क्लासरूम जो एक्टिविटीज़ हैं यानी टीचिंग टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज, इसमें भी हम लाइक ईएलटी का पोर्शन कवर करेंगे. ईएलटी के ऊपर सेपरेट लेक्चर्स भी होंगे. इसमें जो हमारे ऑलरेडी एफपीएससी क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा उनके इंटरव्यूज भी इसमें शामिल किए जाएंगे. और जो मेरी बुक है कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, वो कॉम्प्लीमेंट्री है इस कोर्स में. सो इफ यू एनरोल इन दिस कोर्स सो दैट विल बी फ्रीली सेंड टू यू, कि डिलीवरी भी आपको फ्री होगी, बुक भी फ्री होगी. So if you want to excel and you want to
mark your success in this upcoming examination by Federal Public Service Commission. Do join me and consider you will be in safe hands. So see you in my class, inshallah. That is going to start on 23rd of February, inshallah.